दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नोटबुक का बिजनेस कैसे होता है। बचपन में हम लोग तो नोटबुक यूज करते थे, नोट्स बनाते थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नोट पे ही करते थे। तो नोटबुक आखिर कैसे बनते हैं, क्या इसके प्रोसेस क्या है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या मशीन्स की जरूरत होते हैं, इन सारे बारे में आज हम जानकारी लेंगे। दोस्तों बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि नोटबुक कैसे बनते हैं इसके बारे में आप बताइए। तो आज आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नोटबुक आखिर बनते कैसे हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ मशीन्स की जरूरत होती है, उन सारी चीजें कहाँ से आती हैं, कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैंने काफी रिसर्च किया। उस रिसर्च के बाद मुझे पता लगा कि ये चीजें कहाँ कहाँ से आती है। तो आज मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इस वीडियो को आप लोग बस लास्ट तक देखिएगा, आखिर इसमें क्या क्या लगता है, क्या मटेरियल होती है। तो ये वीडियो को आप लोग देखते रहिए लास्ट तक, मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो हमें 3 मशीन की जरूरत होगी। पहला है जो स्क्वायर मशीन, दूसरा पिनअप मशीन और तीसरा कटिंग मशीन। इन तीनों मशीन के मदद से हम लोग इस प्रकार का कुछ नोटबुक बना के बाजार में सेल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रोसेस को समझते हैं पहले। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. बहुत ही इजी चीज है, बहुत बड़ा इसमें हम लोगों को इतना भी नहीं लगने वाला है स्किल वगैरह की जरूरत। और इस प्रकार का हम लोग नोटबुक बाजार में सेल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कई प्रकार के नोटबुक आप दिख रहे हैं, ये सारे उस मशीन के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो अब दोस्तों इस बात करें कि आखिर ये इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो मार्केट वैल्यू अगर कोई नोट्स 30 रुपए की बिक रही है तो वो आपको इजिली 25-20 रुपए में आ जाएंगी। तो अगर आप डेली 5000 नोट्स भी बनाते हैं और एक पे 10 रुपया बचते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन का इनकम आपका कितना होगा। बाकी आप में इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और कुछ मैन पावर की जरूरत होती है। तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत ही फाड़ू आइडिया है और इसका 12 महीना मार्केटिंग होती है। मैं एक बात करना चाहता हूं दोस्तों कि ये बिजनेस हमेशा चलेगा, है ना। और ये बिजनेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप इसको बेच सकते हैं। तो इसमें कोई इस प्रकार का डर और भय की बात नहीं है। तो अगर आपके पास 3 से 4 या 5 लाख रुपए आपके पास है तो इस सेटअप को आप ले सकते हैं। और अगर आपको इस सेटअप की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और भी इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों,